Hi friends, Jai Hind, good morning. Hello everyone, Jai Hind, good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Today is 10th March. Yes, पता ही नहीं चला कब नया साल शुरू हुआ and we are already, in mid-March. So 10th March 2023, we start this session with you all, a live session of newspaper analysis. 5 दिन करीब नहीं हुआ. I was in Pune and then I was, then Holi पे we had a very good meeting where I could bring an ex, IO, a mega meet we had on Holy Eve. I hope you all saw that. I hope you all saw that because उसमें हमने काफी issues cover किए थे. Which are related to जैसे trump cards, सांप सीढ़ी, which are related to SSB preparation and all. So हमारा यही effort रहता है YMA में कि how do we change your lives at the earliest. So welcome to this session. Welcome to this session. So happy to see all of you. मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पुराना बच्चा पार्टी, विराट, आयुष, प्रवीण, दीक्षा, कुणाल, शिवानी, सोनी, आयुष, हिमांशु, कैडेट आकिब, सुमेध, खलनायक, मयंक, स्वप्निल तिवारी, पल्लवी मिश्रा, निखिल, शिवम पांडे, रूबीन प्रस्तु, लेट्स वॉच इट, नवाब, या. सो जय हिंद. सो 10th मार्च है एंड फर्स्ट क्वार्टर साल का पूरा होने वाला है. द ईयर इज गोइंग एट फास्ट स्पीड. सो टाइम भी ऐसे जाता रहेगा, बट फॉर यू ऑल you have to have your priorities very clear and what you need to prepare. So I always say be well rounded, be well balanced. अपनी physical fitness भी करना है, अपना current affairs भी करना है, अपनी academics को भी ignore नहीं कर सकते, and you have to cultivate some hobby and interest also. So उसके बारे में बार बार बात करता रहता हूँ. Becoming an officer is a journey you undertake once you decide कि मैंने uniform पहननी है. Okay, and for that it's a gradual. It cannot be done in a hurry. It cannot be done by just wishful thinking. सोचना पड़ेगा, सोचने के साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी. चलो, good to see all. अशोक रेड्डी, गगन, गौरंग मल्होत्रा, नमित डांगर, अनुष्का राज. Anushka is of course doing our BOAC course, one of the most passionate young girls. Sahil, Anshul, Shivam, Drive Fraser, Learner, Ankur, and okay, chalo. So without wasting any time, we'll start with the Indian Express. And you're aware, this is cricket diplomacy at its best. Cricket diplomacy, where the two prime ministers, Prime Minister of India and Prime Minister of Australia, yesterday were there in Ahmedabad watching the fourth test between India and Australia, first day's match. So a lot of optics around that, and this is cricket diplomacy. और आज क्रिकेट के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है, that is quite interesting. जैसी हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ थी, उस तरह का वो नहीं है, but still we have a good rivalry. So this was cricket diplomacy in stadium in Ahmedabad. Later on, of course, the Prime Minister went to, many other activities happened. तो आज बात करूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की. So India top tier security partner. India's partnership with Australia, आगे बताऊंगा explained के अंदर, is now at the strategic level because we are both members of Quad and we have a lot of interest to keep the Pacific. Indo-Pacific is our need. Open Indo-Pacific is our need. ठीक है, Australian Prime Minister. So areas in which we are going to be working with Australia, ये पता होना चाहिए मोटे तौर पे. It is defense, Navy exercise, Army exercise, maybe sale and purchase of equipment and that. So defense. Trade के अंदर Australia is very keen that you buy our wine, you buy our lobsters, our fisheries, and import from us. And tourism. Then is clean energy. Clean energy, basically solar energy, उस पर बात है. And last is education. Though Australian universities already they are setting up campus in Gujarat, and a lot of Indian students go and study in Australia. So we carry a lot of foreign exchange to Australia. तो हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने आते हैं बच्चे, वो यहाँ से अपने रुपीस को कन्वर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में और वहाँ खर्चा करते हैं. So Australia is very keen on defense, on trade, clean energy and education. ये 4 पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए,
ये 4 पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया, आप गलती नहीं खाओगे। यही तरीका है। और मैंने लिखा वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इंडो पैसिफिक इज आवर मेन कंसर्न। बस इतना कर लोगे तो आगे फिर एक्सप्लेन पे बात करूंगा मैं आप लोगों से कि और क्या एरियाज एंड हाउ वी आर गोइंग अप। दिस इज द की। अब कैसे करंट अफेयर मुझे बोलते रहते बच्चे सर याद आता है, तो इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप फालतू की चीजें पढ़ते रहते हो। यू आर नॉट एबल टू कम टू द क्रक्स इश्यूज। और यही मेरा पूरा एम होता है कि मैं आपको ऐसे बुलेट पॉइंट्स दूं, जो कि आप नोट कर लो और उसको देख लो तो आप भूलोगे नहीं। एंड एनी क्वेश्चन कमिंग टू दैट यू विल बी रेडी टू आंसर। नाउ वी कम टू द एडिटोरियल पेज स्ट्रेट। एडिटोरियल पेज में आ रहे हम। द वर्ल्डली वाइज इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ता हूं हमेशा। हियर बेंजामिन डिज़राइली सेज नो गवर्नमेंट कैन be long secure without a formidable opposition। क्यों ये कहा गया, क्यों ये अखबार ने यूज किया, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। बिकॉज वेन एवर दे से समथिंग हियर इट मीन्स इट इज कॉमेंट ऑन द व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। सो फर्स्ट इज जस्टिस इन ग्रे जोन। दिस इज एन आर्टिकल रिटन बाय जनरल Sayyid Atta Hasnan। I know him personally very well, one of the great military leaders in India today. So he's written on this GCM General Court Martial that took place on Captain Bhupinder Singh of 62 RR, where he has been awarded life imprisonment for killing 3 innocent people in South Kashmir। तो ये केस 2020 का है। एंड अगर आप देखो 2021 में 2020 एंड में मैंने भी एक आर्टिकल लिखा, डायलेमा ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। इफ यू गूगल सर्च दैट आर्टिकल, डायलेमा ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, आई थिंक प्रिंट में या स्क्रोल कहीं लिखा था किसी पेपर के लिए, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया। वो एक आर्टिकल आपको मेरा पढ़ना चाहिए, डायलेमा ऑफ फाइटिंग काउंटर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम क्या है, सोल्जर्स को क्या प्रॉब्लम है, पुलिस को क्या प्रॉब्लम है, लोकल्स को क्या प्रॉब्लम है, इंट एजेंसीज को क्या प्रॉब्लम है। सो हियर ही इज टॉकिंग अबाउट दैट हाउ आर्मी टेक्स, वैसे एफ्सपा है in entire Jammu and Kashmir. So this officer could have been saved by using the provisions of AFSPA, but army said nothing doing. Or army ka, we have 10 commandments of the chief. This is more than 25-30 years old, 10 commandments. Usme most important is you will not kill an innocent, you will not rape, you will not loot. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें अगर आपने काम किया, army will not spare you. So this is the case of Captain Bhupinder of 62 RR, where he's being tried for alleged fake encounter in Ashimpura, South Kashmir in July 2020. उसके बाद मैंने आर्टिकल लिखा था। So these were 3 innocent laborers who came from Punch. They were picked up and shot, and बाद में पता लगा कि these people were not terrorists, they were innocent people. And when the parents came, उनका DNA हुआ, सब कुछ हुआ। So army has tried the officer, and so this shows that army maintains its own ethical standards. So whenever any human rights abuse takes place, army takes it very seriously. And if there is a case of rape, if there is a case of fake killing, if there is a case of loot or anything like that, army will not spare you. So ये बड़ी अच्छी चीज है आर्मी का justice system, जो इतना जल्दी उसको but one day I will take a class on how it moves. Once the court gives a judgment, doesn't mean sentence is passed. Now it has to go to the higher authorities. In this case, it will go to Northern Army Commander. So the case file will go to a Northern Army Commander. He will confirm. Once he confirms, okay, I agree with the findings or the judgment of the General Court Martial, only then the sentence can be said to be implemented. Okay? Okay. So now we come to Northeast Promise. This is continuity in government could help address infrastructure, governance challenges, winner takes all, politics raises question. So Northeast में भी dance of democracy is going on. Northeast में भी people who fought against each other after elections have joined hands with each other. And the most interesting case is of Nagaland, where all people have joined the government. The entire 60 MLAs are with the government. There is no opposition. Everyone. So all looking for that pie. We will get some seats, some pie, some ministerial berth. So while continuation of the government is good, if they're through 5 years or another 5 years, so they can continue their policies and develop infrastructure, develop other things and all. But this kind of thing, where everyone joins the government or wants to join the government, or you want to shake hand for other reasons,
other than governance, then that point. So the paper is very clear, and that is why it said without opposition, democracy will die. So here, all MLAs, all parties have joined the government in Nagaland. कि भाई हम आपकी government में. So there is no opposition. So this is dance of democracy at its best. Anyway, now we come here. There are three very interesting articles. This is by retired IPS officer, retired woman IPS officer Meera Chadda Borwankar, the day after Women's Day. So days after Women's Day, she's written a she's touched upon very important issues. तो मैंने बता दूं आपको Women's Day के बारे में. तो इन्होंने क्या लिखा है? Being a retired IPS officer, she says there is a hostility in the environment whenever a woman officer goes for pregnancy and maternity leave, and when she comes back, because the leave period is so long, and when you come back again, women have a little baby, so they need to nurse them and all that. So this people must understand that their body slows down, their capability to work also slows down. If society accepts that we must have more women in the workforce, then menstruating and childbearing stages in a woman's career should also be accepted naturally without casting aspersions on their capabilities. So this is one part. She's talking officers, but it is much more relevant to women in workforce, even laboring, women who work as laborers, women who work at this thing. Nobody understands their plight. Then she says, one good point she says is, now that gender equality is coming, let's say goodbye to all women police stations. इसलिए मैंने आर्टिकल पढ़ा AWPs. क्या ट्रेंड बन गया कि all women police station होगा. So all cases related to dowry, women problem, you have to go to that. Sometimes they are not close by, they are very far away. And ये भी एक gender discrimination. और वहां पर she says in all women police stations, the tendency is to कि तुम यार सलाह मशवरा करके रफा दफा करो केस को. So this is what she says, कि we must say goodbye to all women police stations, and in the armed forces and police, in the paramilitary forces, it's good that the women are coming. More women need to come and be accepted as natural leaders. That is now. This is on the pension bill, on the pension system, old pension scheme versus NPS, new pension scheme. Very interesting article. अगर पेंशन के बारे में आपने जाना, ये इशू लेक्चरेट वगैरह में आ सकता है, बट अदरवाइज इट कीप्स कमिंग अदरवाइज इन द न्यूज. बट द लास्ट पार्ट is very interesting, targeting the newsroom. उसके ऊपर आगे भी एक आर्टिकल है. That this is written by John Samuel. He is a former UN official. He's worked in the United States nations. He says dissent is cornerstone of democratic society. Please mark this word dissent. बहुत बढ़िया word है dissent. Dissent करना means disagreement. ये encourage होना चाहिए democracy में. But he says there's increasing trend of intolerance of any critique of power. But he says कि the moment you criticize somebody in power, there is intolerance. And even in so-called democratic countries, freedom of the media guaranteed under the right to freedom of speech and expression is under the increasing government pressure and targeted assault in different parts of the country. So he says it should be cornerstone of any democracy, dissent, disagreement, criticism. But here it is not tolerated. He says the latest report of World Press Freedom Index, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो लेटेस्ट रैंकिंग आया है, उसमें स्टेट दे हैव कंपेयर्ड स्टेट ऑफ जर्नलिस्ट इन 180 कंट्रीज, 180 कंट्रीज में कंपेयर किया. इंडियाज रैंक फेल. वी वर 133 इन 2016, टुडे वी आर 150. 180 में से 150वीं पोजीशन हमारी ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, विच इज नॉट गुड. एज पर वेरियस रिपोर्ट 67 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड लास्ट ईयर. एंड then is talking of the Kerala state, which has highest literacy, which has a very good democratic traditions. Even then, raids on newspapers and television channels and all that. इसकी आगे भी मैं बात करूँगा. So freedom of press can come as a lecture topic. It can be a group discussion topic also. And otherwise also you should know why India's position 150 is really a very poor position in freedom of press for a democracy. Dictatorship की अलग बात. Now we come to here we come. This is of course the election in Nepal. I've been covering this election in Nepal. I've been covering this. Mr. Podal has been elected as the president with a thumping majority. So he will succeed Vidya Devi Bhandari.
on in 2 days time he'll be the new president of Nepal, ceremonial president like Indian president. But जिस तरह की पॉलिटिक्स नेपाल में चल रही है, कब सरकार बनती है गिरती है, तो प्रेसिडेंट का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है. So he's come at a very crucial time as the president of Nepal. Russia-Ukraine war, I was on a TV debate also yesterday. There is a renewed aggression from Russia and hitting power stations, nuclear power generation, and trying to destroy as much energy sector in and the defense infrastructure in Ukraine. So Russia is on a aggressive, and there's a massive battle taking place for Bakhmut. Bakhmut is a place city. If that falls in next couple of days, that will open up further ingress of the Russian forces into Ukraine. So let's wait and watch. A large part of Ukrainian forces को चारों तरफ से घेरा डाल के रशिया ने बखमुत के अंदर, and they are planning to capture this city. It's a extraneous east coast city along with Donetsk and Donbass and all these places. Okay. Now we come to explain. सबसे पहले मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप लूंगा. इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इतना बढ़िया ये शुभजीत रॉय ने आर्टिकल लिखा है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं. इफ यू हैव दिस आर्टिकल, यू कैन जस्ट कट इट एंड पेस्ट इट, फोल्ड करके इसको अपनी करंट अफेयर्स की जो मैंने रजिस्टर बोला उसमें डाल सकते हो. बिकॉज ही इज टॉकिंग ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि कैसे इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले रिलेशनशिप कैसे थी, कोल्ड वॉर के टाइम कैसी थी, उसके बाद कैसे, एंड टू कम टू क्वाड जहां हम इसका मेंबर है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अमेरिका के साथ. देन कम स्ट्रेटेजिक टाइज. 2014 में वी हैड स्ट्रेटेजिक टाइज with Australia. Then we come to China factor. How we are dealing with China is a common factor between Australia and us. That is basically Indo-Pacific के अंदर. And then wide cooperation. Wide cooperation में सबसे ऊपर है people to people. So more people to people जब हम कहते हैं tourism, basically tourism. घूमना फिरना, visa, people going for permanent residency, PR मिलना, वो सब है. Then we come to education. Education में Australia has taken the lead compared to other countries, and 2 university यहाँ already established होने वाले. And a lot of Indian students go to Australia to study. Defense cooperation. ये जरूरी है. Defense cooperation जहाँ पर we are having this Malabar exercises, and the Australian Prime Minister was on INS Vikrant. INS, first foreign Prime Minister to be on an Indian naval ship of this size. And then clean energy. तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड, इसके ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने बढ़िया तरीके से कवर किया. नाउ दिस इज एन इकोनॉमिक न्यूज. देन लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार कार्ड बाय March 31st. आई एम श्योर नन ऑफ यू आर, मेनी ऑफ यू मे नॉट इवन हैव द पैन कार्ड. ठीक है, जब कमाना शुरू करोगे तब इंपॉर्टेंट पड़ेगा. नाउ दिस इज व्हाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी थिंक इट्स टाइम द मून गेट्स इट ओन टाइम. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है कि आफ्टर मेनी almost 5 decades, there is again resurgence to go and occupy moon and land on moon. तो अभी तक तो मून के ऊपर जो कोई टाइम का फैक्टर नहीं था. जो भी अपनी कंट्री में जिसका भी एयरक्राफ्ट गया हुआ वहां पे वो वही टाइम बताते थे. बट नाउ नासा इज प्लानिंग टू हैव मून टाइम आल्सो, लाइक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम. इसी प्रकार से मून विल हैव इट्स ओन टाइम. सो उस पे हाउ द this is interesting news on that. Okay, so Indian Express. अब मैं हिंदू, to save time, because this is what some of you said, sir, keep it short, so I want to keep it under 30-35 minutes. Now this is the Hindu. Straight to the editorial. Free of opposition, Nagaland. कि वो opposition ही नहीं है, ये भी democracy है. All those who fought, they were all fighting against each other, but election के बाद we joined hands to share the pie. So all parties are in Nagaland are scrabbling for the power pie. This is a major issue of Indian democracy. Indian democracy का major issue यही है. कुछ हर एक को power चाहिए, and if you get power, then you get some share in the pie in giving contracts, or in, you can do things whatever you wish to. So that is now this is a very hard hitting article. Media raids and breaking the silence on freedom of press. देखो इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा था उन्होंने, और यहाँ पर भी. This is written by Apar Gupta. He is co-founder and executive director of Internet Freedom Foundation of India. Internet Freedom Foundation of India के executive director और founder है. तो इन्होंने लिखा है, this is on the
BBC raid on BBC. He said it was so clear. He said it was so clear कि फिल्म आई बीबीसी की गुजरात रॉयट्स पे, उसके बाद एक डिक्टम पास हुआ कि इसको फिल्म के सारे लिंक निकालो, और उसके बाद बीबीसी के ऑफिस पे 3 दिन के लिए रेड हुआ, एंड देयर डिवाइसेस बीइंग स्नैच्ड एंड जर्नलिस्ट बीइंग ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स. तो ये इसके ऊपर इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग आर्टिकल कि हाउ कैन यू टेक समबडीज डिवाइस, योर लैपटॉप और फोन एंड अगर अकाउंट्स का इशू था, इनकम टैक्स पे एंड ऑल कोई प्रोसीजर, इट कुड हैव बीन डन अदरवाइज. यू डोंट हैव टू गो एंड raid officers of a press institution, BBC. It's the world's most renowned press agency, British Broadcasting. Even the Prime Minister of Britain can't dictate it to them. वो भी नहीं कह सकते कि ऐसे करो का. So this is on that. Then now we are coming to this is stopping the boats. This is a harsh criticism of Prime Minister Rishi Sunak of UK, where they've said that we will not allow any small boats on British shores, and they will be sent to Rwanda. वहाँ से. So they say that these people, you are part of the UNHCR, and you cannot deny refugees who come to land, because these are people and human rights must be taken into cognizance. So उसके बारे में है. This is a very good article on ideal track to run India's logistics system. ये बहुत interesting है कि गति शक्ति, which is a very very good initiative, national master plan where we are building Bharatmala, direct freight corridor from our ports to our main cities जैसे Delhi, Bombay. So there'll be a rail line only for goods trains, nothing else. ऐसे roads are coming up. So उसके अंदर what these two writers are trying to say here is that more and more emphasis is now on the roads. ट्रक चल रहे हैं दबा के, रेलवेज पे कम हो गया, रेलवेज का लॉस भी बहुत होता है इसकी वजह से. और मैंने एक दिन बात बताई थी, रेलवेज प्रॉफिट कहां से कमाता है? रेलवेज, हाउ डज रेलवेज अर्न मनी? नॉट बाय पैसेंजर ट्रेन्स, नॉट बाय राजधानी एंड मेल एक्सप्रेस, नो. हमारी टिकट से पैसे नहीं कमाता रेलवेज. रेलवेज अर्न्स मनी व्हेन इट्स ट्रांसपोर्ट्स गुड्स, जब गुड्स. लेकिन क्या हो गया, कुछ सालों से रेलवे पे कम जोर है, लोगों के ट्रक पे ज्यादा है. और ट्रक पे जब होता है तो शहरों में पोल्यूशन होता है, कंजेशन होता है, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं. सो दे आर सेइंग कि एज पर गति शक्ति, मोर एंड मोर फ्राइट शुड मूव ऑन रेलवेज. दैट इज क्लीनर वे ऑफ मूविंग लॉजिस्टिक्स. ये बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है कि हमारा 65% फ्रेट इज ऑन रोड, and that means railways is very less. So it should increase more and more on train and container traffic. अब containers में आता है, इसके ऊपर है. Very interesting. Then of course we have on the cheetahs, we have come from Namibia and now South Africa, how they will adapt to. And the last article I have for you is on Sri Lanka. On Sri Lanka, the elusive political solution in Sri Lanka. श्रीलंका एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, बट वहाँ जो तमिल और सिन्हालास का बहुत बहुत गहरा पेचीदा मामला है, और आज से नहीं. So Tamils which are in the northern part of Sri Lanka, which have immigrated from India during the British time to go and work in the tea plantations there, have been prosecuted over the years by the majority Sinhala population, Buddhist Sinhala population. उसी की वजह से लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम LTT was established by Prabhakar. Most bloodshed ever seen in the world in this small island. We call the teardrop. इसको क्या कहते हैं? एक आंसू का क्या बोलेंगे? टीयर ड्रॉप बोलते हैं इसको. आंसू की बूंद जो है श्रीलंका को, या बोलो पर्ल है. इट्स लाइक अ पर्ल इन द इंडियन ओशन. वहां पे 30 years there was insurgency. Finally LTT was demolished. But the Tamil issues are still there. So this article is on that. इसमें जिस्ट दिया हुआ है, नहीं भी इतना पढ़ना, ये जिस्ट आपके पास है, आपको पता है क्या इशू है. ठीक है. So very interesting. And this newspaper being a South Indian based newspaper, Hindu is basically headquartered in Chennai. So they cover Sri Lanka and Tamil issues very nicely. Then know your English word of the day. And of course you have the, Indo-Australian, agreement. Then we have an agreement MOU on semiconductors with the US here. So ये है आज की खबरें. So I thought I'll
जस्ट कवर दिस मच। तो कई दिनों के बाद आए, पहले तो प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। ठीक है, इसके लिए मेरे को 1.5 घंटा पहले पेपर पढ़ना पड़ता है, एंड देन आई स्टॉप ऑल माई एक्टिविटीज, एवरीथिंग स्टार्ट्स आफ्टर आई फिनिश दिस एनालिसिस। तो बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आता हूँ, सो दैट मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं, तुम्हारा फायदा हो कहीं ना कहीं। ठीक है, सो नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस वेरी क्विकली। सो जय हिंद, सबकी मैंने एक्सेप्ट कर ली थी मॉर्निंग में। नवाब सेज आई एम न्यू हियर। Sumit says, good to see you. I'm also happy to see you. Mrityunjay, Namit Dhangar, sir, please take lecture on lecture topic in SSB. Okay. Pankaj, Shivam Pandey, Akhil, Raj Burande. Do you think smaller alliances like International Solar are more intimate than G20 other forums to advocate our seat in security? See, seat in Security Council will not come through G20 or Solar Alliance and all. Okay. It will come when the P5, the permanent five, feel that there is a need to reinvent the UN. And when other countries, like we have to go along with South Africa, we have to go along with Brazil, okay, and Australia, Japan, Germany, ये कंट्री जो पावरफुल कंट्रीज हैं, ये इकट्ठे होंगे, तब जाके P5 को हिलाया जाएगा, तब इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल पे परमानेंट सीट मिल सकती है। या सिक्योरिटी काउंसिल को अबॉलिश किया जाए, देयर शुड बी नो परमानेंट सीट, दैट इज अनदर सॉल्यूशन। यस, अमन पिंटो है राइट। Jal Hasnan has written a chapter in my book Men of Steel on mentoring and grooming. R.K. Raghu, sir, I'm not speaking English and I'm coming village. How can I developing in English and crack CDS, sir? Please reply. R.K. Raghu, you can join the next BOCC course. और ये समर में 2-3 कोर्स होंगे, उसकी फीस मैंने ऑलमोस्ट 30% स्लैश कर दी है। इट्स ऑलमोस्ट एट नो लॉस नो प्रॉफिट कोर्स, BOCC कोर्स 14, जो कि अभी 15 मार्च से स्टार्ट है। प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स एंड सी योर लाइफ चेंज। प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स एंड सी योर लाइफ चेंज। ठीक है, 3 months कोर्स है, एंड ओनली वे, अदरवाइज मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आता जिनकी इंग्लिश कमजोर। विदाउट इंग्लिश प्लीज सपना देखना भी थोड़ा सा, मुझे वो लगता है ऑफिसर बनने का कोई बात बनती नहीं। हिमांशु सूर्या, सर, माय फाइनेंशियल बैकग्राउंड sometimes hit very hard on my mind and I'm get frustrated which I can't focus on my preparation. Himanshu Surya, this is a time, this shows your strength of your character and your abilities. ठीक है, बहुत से लोग very I've seen people from very poor families making it to NDA, IMA, OT, very poor families. अगर आप फाइट कर सकते हो, you should have the passion to work. शिवानी पांडे, सर, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में तो स्पेशल फोर्सेस होती है ना? अब मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में स्पेशल फोर्सेस होती हैं क्या? आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट इज डिफरेंट, स्पेशल पुलिस फोर्सेस में स्पेशल पुलिस फोर्स, अच्छा, आई डोंट नो। ये पहले तो ये शिवानी ये सोचना शुरू कर दो कि these are all based on statistics, based on study what is happening. You are aware so many journalists are languishing in jail or arrested, put under UAPA, or their offices raided. All the independent news agencies, sometime or the other, there's a raid on their offices. So that is what is visible. You go in US, UK and all, you can criticize anyone. Nobody will even question you. Nobody can send you to jail for criticizing somebody in power. डिबेट वीडियो अमन कुमार आएगी संडे को तैयार होगी वो, एंड नेक्स्ट डिबेट की भी डेट आने वाली है। वेरी सून वी विल हैव मार्च की, हर महीने होगा, हर महीने YMA का डिबेट कंपटीशन होगा। हाई सी क्या है? हाई सी इज जो डीप इन द ओशन, सिंपल भाषा में बोले जाए, समुद्र में आगे अंदर जाना। जो हमारा 12 किलोमीटर तक हमारा जो है एक्सक्लूसिव जोन होता है, उसके बाद जब आप अंदर समुद्र में चले उसको हाई सीज कहते हैं, जब पानी है और कहीं आसपास लैंड नहीं है। अंकिता सिंह, सर, रिगार्डिंग टू कीप शॉर्ट द एनालिसिस डोंट मेक मच सेंस, इफ यू कवर द टाइम्स यू कैन गेट सम मोर इंफॉर्मेशन। सो ओके। कल टेलीग्राम पे जो PDF था वो US की असेसमेंट थी,
थ्रेट असेसमेंट बाय यूएस, 40 पेज का है. व्हाट यूएस फील्स, दैट इज यूएस का अंडरस्टैंडिंग. दे आर क्रिटिकल अबाउट चाइना और रशिया. इट्स अमेरिकन डॉक्यूमेंट, सो आई हैव जस्ट शेयर्ड इट. उसमें कुछ चीजें हैं जो इंडिया से कम, दोज हु हैव इंटरेस्ट कैन रीड इट. Yeah, LTT is before Rajiv Gandhi. LTT is much before Rajiv Gandhi. It was at Rajiv Gandhi's time as Prime Minister we signed the deal, and Indian peacekeeping force was launched in Sri Lanka in 1987. And imagine he was killed by LTT. He was killed by LTT. He was assassinated. Yeah, please join the BOCC course. Sir, your questions to the book. I have purchased the book Return of again in क्या है? I am from English spoken week. Please help me, sir. गुलशन कुमार, if week का अपने VEA के होता है कमजोर, VEE के होता है week means हफ्ता. तो please BOCC course join कर लो if you want to, and not only becoming officer. Please ये छोड़ दो कि यार ये इंग्लिश सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए. अगर कहीं प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज के बाद, कहीं अच्छा जॉब चाहिए, इंग्लिश इज मस्ट. नहीं तो चुटपुट काम करते रहोगे, अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी, अच्छे टीचर भी नहीं बन सकते अगर इंग्लिश नहीं आती तो. रिटर्न ऑफ द किंग. ओके. या अंकिता, सर मोस्ट ऑफ विच टॉपिक इज आस्क्ड. भाई नमित, आप भी पहले इंग्लिश ठीक करो. नमित सर, मोस्ट ऑफ विच टॉपिक इज आस्क्ड इन लेक्चर. कुछ समझ नहीं आता है, आप हिंदी की इंग्लिश बनाने में कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे बनेगी नहीं बात. एक्सप्लेन अबाउट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. दिस वाज अ टर्म यूज्ड in ancient time when your growth is very small. So Hindu undivided growth means growth is in 2 or 3% like this per year. Slow, कोई प्रॉब्लम. जैसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती थी, तो ये ऐसे यूज होता है. तो ये मिस्टर किन्होंने इनका नाम लिया है, ही इज बीन स्पीकिंग अबाउट इट ऑन दिस, बट इट वाज कवर्ड फ्यू डेज बैक. This debate is open for YMA students as of now. That is those who have done BOCC course के alumni, BOAC course के alumni. So we have thousands of children who have done these two courses. तो अभी उनके लिए है, क्योंकि उनको मैं I can't lose. I want them to keep improving. अगर साल पहले भी कोर्स किया तो भी मैं उनके साथ टच में रहता हूँ, उनके साथ टच में मेरी टीम रहती है. तो हम अपने बच्चे जो हमारे साथ आ गया, फैमिली मेंबर बन गया. वी डोंट अबेंडन की कोर्स गया तो खत्म, ऐसे नहीं होता. Can cheetahs help India's grassland? Let's wait and watch. I don't think so. BOCC course, where are located? It's not located. It is online. Mera Hindustan. Again, it is online course. Online English language and personality development course through Zoom on your mobile or laptop or any system. Online. घर बैठ के आराम से. Vijayan Pandey, I'm new here. Welcome. शिवम पांडे, आप यू ज्वाइन दिस कोर्स, BOCC कोर्स, अगर SSB के लिए आपने करना है. यस, राज बुरांडे, यूर राइट. हाँ, डिबेट कंपटीशन इज ओपन टू YMA स्टूडेंट्स. तो अभी आप अगर BOCC कोर्स के लिए एनरोल करोगे तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग पार्ट. बट इसमें फिल्ट्रेशन है. पहले स्टेज पे बच्चे अपनी अपनी रील बना के भेजते हैं, देन इंडिपेंडेंट कमिटी है, मैं नहीं बैठता उसमें. द इंडिपेंडेंट कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स की मैं कमिटी बनाता हूँ. लीडरशिप उनको, वो डिसाइड करते हैं कौन फाइनलिस्ट होंगे. फिर वो वही कंडक्ट करते हैं डिबेट. टॉपिक मेरे से डिस्कस करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं. आई ओनली कम टू जज. सो आई एम ऑल्सो गिविंग यू लीडरशिप क्वालिटीज कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है. तो पिछली बार अवध ने किया था, इस बार राहुल करेगा. राहुल, आई एम प्लान टू पुट 2 1 बॉय एंड 1 गर्ल in the organizing team. तो उनको इमेजिन करो 10 दिन दे आर वर्किंग ऑन द डिबेट कंपटीशन. तो बहुत इंटरेस्टिंग लीडरशिप भी सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी सिखा रहे हैं. हम एक सही तरीका सिखा रहे हैं आपको अपनी लाइफ चेंज करने का. यस, मेरा हिंदुस्तान ऑनलाइन. आई एम NDA स्टूडेंट्स. भाई इंग्लिश इंप्रूव करो बच्चा पार्टी. साइकोलॉजी आपको कराएंगे.
BOAC कोर्स में वी हैव अ फुल फ्लेजेड साइकोलॉजिस्ट कमांडर लिली. शी विल गिव यू फुल साइक असेसमेंट. चलो तो ठीक है बच्चा पार्टी. वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ न्यूज. आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस. एंड BOCC का फीस हमने 30% कट किया, इसीलिए कि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मैम आई डोंट हैव मनी एंड आई डोंट वांट टू जॉइन द कोर्स. सो प्लीज जॉइन द कोर्स समर मंथ्स में. मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यूज योर समर मंथ्स कंस्ट्रक्टिवली. ठीक है. और ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, बहुत मजा आता है इसमें. अभी हम इस संडे को हम BOCC 11 का वैलिडिटी फंक्शन करेंगे. तो मैं देखता हूं आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा वो किस प्रकार से बच्चे इंग्लिश बोल रहे होंगे और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई. सो ये हम दिखाएंगे संडे को. थैंक यू वेरी मच. प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. It's a 3 months course, Aman. It's a 3 months course, but lifetime mentoring. When I say lifetime means 2-3 साल बाद भी वो बच्चा हमारे टच में आएगा, उसको कोई इशू है तो we can guide him. That is the essence of lifetime mentorship. But it's a 3 months course. 3 months course. 3 महीने का कोर्स है, बिकॉज 3 महीने चाहिए. And 6 days a week classes. I am coming to Patna, not to Varanasi. Yeah, BOCC is every month. So I am coming to Patna. On 19th. Next Sunday I'll be in Patna. So जिसने SSB की प्रिपरेशन करनी हो BOAC ज्वाइन कर लो. और जिसका कम्युनिकेशन खराब है, थोड़ा कमजोर है, कॉन्फिडेंस लैक करते हो, बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता इंग्लिश में, फिर आप पहले BOCC करो पूरा 3 महीने. डिवोट योर टाइम टू दिस एंड सी हाउ योर लाइफ विल चेंज. सो आई जस्ट शेयर माई टेलीग्राम लिंक विद यू. जो नए आए हैं बच्चे, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक. एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द मोर कम्युनिटी, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, जहां आप सारी बातें आपकी हो सकती हैं. एंड 2 नंबर दिए हुए हैं. देयर आर 2 numbers which are given in each of my videos. इसके नीचे भी दिए होंगे. प्लीज गिव WhatsApp message to those 2 numbers. You will get a reply. Within 24 hours, somebody will call you or give you a reply. जम्मू का भी पता नहीं है. चलो, थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ये इस टाइप से न्यूज़पेपर एनालिसिस सुबह सुबह आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं. सो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल. लव यू ऑल. स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड. काम करना है, ठीक है. ना इंग्लिश से डरना है, ना करंट अफेयर से डरना है. आई एम हियर फॉर यू. ना SSB से डरना है, ठीक है. मेरी टीम, पूरी की पूरी टीम तैयार है आपकी जिंदगी बदलने के. ठीक है. चलो, बाय बाय.